topic for the day is areas of similar triangles. We are starting with theorem 6.6 of NCERT. It states that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. We will break it into parts and try to understand. क्या है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR और अगर वो दोनों सिमिलर हैं, यानी कि गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR में, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो एरियाज का रेशियो है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो जब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ, सो दैट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किस रेशियो के स्क्वायर्स के बराबर है, यानी और क्या क्या होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी BC अपॉन QR का स्क्वायर और AC अपॉन PR का स्क्वायर। कह रहा है अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरियाज का रेशियो हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। इसको प्रूव कैसे करें? गिवन है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब एक तो है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर है एंड ऑल थ्री एंगल्स A इक्वल है P के, B इक्वल है Q के और C इक्वल है एंगल R के। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस थिंग। नाउ we will start with the proof. Now we are going to do a small construction. We are going to draw AM perpendicular to BC and let's say PN perpendicular to side QR of the triangle. Now can I say area of a triangle is half into its base into its height? So this implies area of triangle ABC is equals to half into, if I take base as BC, height is AM. If I try to, they are already given similar, तो हमें similar proof करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इनका रेशियो ले सकते हैं। If I try to take ratio with triangle PQR, let's see, half into base हो गया हमारा QR और height है अभी हमारी PN, right? हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास बचता है BC अपॉन QR into AM अपॉन PN। पर हमें क्या चाहिए था? किसी भी एक साइड का स्क्वायर, चाहे AB अपॉन PQ का स्क्वायर आ जाए, चाहे BC अपॉन QR का स्क्वायर आ जाए, चाहे AC अपॉन PR का स्क्वायर आ जाए। अभी हमारे यहाँ पे BC अपॉन QR तो बन गया, किसी तरह से अगर मैं इसको भी BC अपॉन QR बना दूँ, यानी कि AM को इक्वल कर दूँ BC के और PN को इक्वल कर दूँ QR के, तो मेरा काम बन जाएगा और मैं सिमिलरली करके बाकी प्रूफ्स लिख दूँगी। So my aim is to now make this and this equal. How will I do that? अब मैं दो ऐसे ट्राइंगल्स लूँगी जिसमें मेरा BC और AM आ रहा है। पहला तो ये है जिसमें मेरा BC भी आ रहा हो और मेरा AM भी आ रहा हो। अब BC जो है मेरा, उसको मैं नहीं छेड़ती हूँ, मैं क्या करती हूँ AM और PM। अब BC तो ये बड़े ट्राइंगल में है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं AB और PQ वाला लेती हूँ। कौन सा साइड? क्योंकि BC अपॉन QR जो था मेरा वो AB अपॉन PQ के इक्वल है, तो मैं इसको लिखती हूँ कि AB अपॉन PQ इंटू AM अपॉन PN। इसको मैं मार्क करती हूँ इक्वेशन 1। अब देखो क्या ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें AB और AM आ रहा हो? हाँ है, ये वाला ट्राइंगल हमारा। ऐसा कोई है जिसमें PQ और PN आ रहा हो?
एंगल्स को अब मैं सिमिलर करने की कोशिश करूँगी. कैसे? आई विल से इन ट्राइंगल ABM and triangle PQM, what is happening? Can I say angle B इसका बराबर है इसके एंगल Q के? ऊपर ही लिख दिया था मैंने गिवन में, because it is given to us कि triangle similar है तो उसके corresponding angles equal होंगे. दूसरी बात, एंगल M इसका बराबर है एंगल M के. 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था. Therefore, triangle ABM is similar to triangle PQN. नाम ध्यान से लिखेंगे, N के सामने N, B के सामने Q, by AA similarity criteria. अब इसका मतलब क्या है कि AB upon PQ बराबर है हमारा AM upon PN के, बराबर है हमारा AB upon PM upon QN. हम इसमें से सिर्फ पहले दो रेशियोज कंसिडर करते हैं और इसको मार्क कर देते हैं 2 रेशियो. 1 और 2 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 में AM अपॉन PN की जगह AB अपॉन PQ पुट कर सकते हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट एरिया, इसकी LHS भी हम दोबारा लिखेंगे जो हमने ऊपर यहाँ लिखी हुई थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equals to AB upon PQ as it is रहेगा. और हम AM upon PN की जगह फिर से AB upon PQ यहाँ से लिख सकते हैं. तो it makes it AB upon PQ का होल स्क्वायर. That means ये ट्राइंगल्स के रेशियो के एरियाज के रेशियो बराबर आ रहे हैं इस साइड के स्क्वायर के रेशियो के. सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि बाकी जो हमारे रेशियोज हैं, यानी कि ये पूरी जो कंडीशन थी, ये जो ट्राइंगल के एरियाज के रेशियो है, ये BC अपॉन QR के स्क्वायर भी इक्वल होगा, AC अपॉन PR स्क्वायर के भी इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि अब AB अपॉन PQ इक्वल है तुम्हारा BC अपॉन QR, तो इसकी जगह मैं BC अपॉन QR का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ. ये जो BC अपॉन QR है वो हमारा इक्वल है AC अपॉन PR, तो इसकी जगह मैं AC अपॉन PR का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ. Hence proved. Now we are starting with exercise 6.4, question number 1. It says that a triangle ABC is similar to triangle DEF. Also it is given that area of triangle ABC is 64 centimeter square and DEF is 121 centimeter square, and we have to calculate the measurement of side BC wherein EF is given as 15.4 centimeter. So we have learnt a theorem which says that if two triangles are similar, then the ratio of their areas, that is, if I divide their areas, that will be equal to the ratio of the square of their corresponding sides. That means area of triangle ABC upon area of triangle DEF will be equal to AB upon DE whole square, will be equal to BC upon EF whole square, will be equal to AC upon DF whole square by using theorem 6.6. Now we have to see which ratio to consider. Now we want EF and BC to be considered. So we will consider only this part, ratios of the areas of triangles and this. So let us substitute their values. Area of triangle ABC is 64, area of triangle DEF is 121, BC, we will let it be as BC square only, EF is 15.4 square. Taking square root on both sides, we get 8 upon 11 is equal to BC upon 15.4,
then we will cross multiply and we will get the value of BC, which is coming out to be 11.2 centimeters. But please remember to write the statement of the theorem. Let us come to question 2. It says that diagonals of trapezium ABCD intersect at point O and AB is parallel to CD. Also given that AB is twice of CD. So if I write this ratio AB upon CD becomes 2:1. Right? We have to find the ratio of triangle AOB. Area of triangle AOB is to area of triangle COD. So again we want to apply that theorem. But one thing to keep in mind, that theorem can be applied only if the given triangles are similar. So that means here our first step is to make triangle AOB similar to triangle COD. Then we will apply that theorem on it. So let us see. In triangle AOB and triangle COD. So do you think angle 1 is equals to angle 2? Vertically opposite angles. Also we can find a relation between angle 3 and angle 4 because the sides are parallel. So let's write 1 is equals to 2 vertically opposite angles. Angle 3 is equals to angle 4 because they are alternate interior angles as AB is parallel to CD, and please mention the transversal, which is AC is transversal in this case. This implies triangle AOB is similar to triangle, again I am putting dashes, O will be in front of O, but A and C are equal, so CO D, it becomes by double A similarity criteria. Now once the triangles are similar, we can apply the theorem. Applying theorem 6.6, using this theorem we can say that if there are two similar triangles, the ratio of the areas of both of them, मतलब डिवाइड करेंगे दोनों के एरियाज को, that will be equal to the ratio of the square of their corresponding sides. तो पहले corresponding sides लिख लेते हैं, AB, CD, OB, OD, AB, AO, CO, and then we can put squares on them. Again the question comes, which side to consider? See, we are already having one ratio, so we are going to consider only this side, and let's just substitute the value. So area of triangle AOB upon area of triangle COD will be equal to 2 upon 1 whole square, that is 4 upon 1. So ratio is coming out to be 4:1. That is your answer. We are starting with question 3 of exercise 6.4. It says that there are two triangles, triangle ABC and triangle DBC. They share a common base BC, and we have to show that the ratio of area of triangle ABC is to triangle DBC is equals to AO upon DO. Let us first identify whether these sides belong to these triangles or not. Now AO is lying here, DO is lying here. Whereas in triangle ABC, this AO side is not involved. Similarly, in triangle DBC, this OD side is not involved. So we cannot try to even apply theorem 6.6 here. Moreover, the triangles have to be similar to apply that theorem. So we cannot apply over here because nothing is given to us in terms of similarity. So we are going to do a little construction here. We will construct a perpendicular, let's say AE perpendicular to side BC, and also a perpendicular from D on side BC. Let's say DF is perpendicular to side BC.
नाउ वन हिंट दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर कि हमने डी से BC पे क्यों बनाया, C से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमें A और D चाहिए रेशियो में। तो A का रिलेशनशिप, AO का रिलेशनशिप DO से निकालना है, तो अगर हमने A से बनाया परपेंडिकुलर तो इधर हम D से बनाएंगे परपेंडिकुलर। लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। We will say, first of all, our first step here is to make these two triangles similar. Why I am doing that, I'll let you know when I reach a conclusion. Now, in triangle AOE and triangle FOD, angle E is equals to angle F, 90 degree by construction. Second point, if you look again, vertically opposite angle, this angle 1 and 2 are vertically opposite angles. Therefore, triangle AOE is similar to triangle FOD by AA similarity criteria. Now, what does this give? This gives us that if two triangles are similar, then ratio of their sides are proportional. So, AO upon FO will be equal, see now, one thing you have to again keep in mind. Angle E is equals to F. So in front of E, F has to come. O is equals to O and here D. Now we will take the ratio. AD or AO upon DO is equal to OE upon OF is equal to AE upon DF. Now this ratio is required to us. That's why we have attempted to first calculate somewhere this ratio. ये ratio in triangles के अंदर included नहीं था, तो ये ratio exist नहीं कर रहा था, हमने निकाला है ये ratio. Now let it be equation 1. अब इस ratio को हमें equal करना है इस triangle के area के. कैसे करेंगे? Area of triangle ABC हो जाएगा हमारा half into base अगर देखें तो BC, height हमें ली AE. अभी देखते हैं area of triangle DBC is equals to again half, base is BC and height is now FD. Half gets cancelled, BC gets cancelled, so we get here area of triangle ABC is to area of triangle DBC is AE upon FD. Let us mark it as equation. Now this AE upon DF is same as AO upon DO. So can I just equate the two? From equation 1 and 2 we get area of triangle ABC is to area of triangle DBC is equals to now AO upon DO. Exercise 6.4, question 4. If areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. Means, two triangles are given to us which are similar to each other, and also it is given that their areas are equal. We have to show that those two similar triangles are congruent also. Means what we have to show? Since they are already similar, this implies that all angles are equal. Also, the sides are proportional, that is AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. This is already given. Also, their areas are equal. If I take them in ratio, that means area of triangle ABC is to area of triangle PQR equal है, इसीलिए 1:1 के रेशियो में है. हमें शो करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल्स इक्वल हैं, वो तो हमें पता ही है. बेसिकली हमें यहाँ ये शो करना है कि सारी जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं. हमें ये तो पता है कि वो प्रोपोर्शनल है, बस हमें उन्हें बराबर शो करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. नाउ I am applying theorem 6.6. क्या कहती है थ्योरम?
If two triangles are similar, then the ratio of the areas of the two similar triangles यानी कि ABC का area upon PQR का area will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब इनकी corresponding sides क्या है? AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR इनके square के बराबर है. Let us consider this first ratio. अब AB upon PQ की जगह एरिया ऑफ ABC upon PQR की जगह मैं 1:1 डाल सकती हूँ. फिर मैं लिख सकती हूँ 1:1 is equal to AB upon PQ का होल स्क्वायर, which is and 1:1 is equal to BC upon QR का होल स्क्वायर. I am using which two equations? Equation 1 and now let me mark it as 2. So from 1 and 2, I can say that 1:1 is equal to AC upon PR का whole square. If we take square roots, so I get 1 is equal to AB upon PQ. This implies what? This implies if I cross multiply, PQ is equal to AB. Similarly, from here we can say that 1 is equal to BC upon QR. Yeah, 1 upon 1. This implies BC is equal to QR. From here what can we say? Same thing. 1 upon 1 is equal to AC upon PR. This implies AC is equal to PR. So from these three results I can say that therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR, hence proved. Question 5, it says D, E and F are the midpoints of side AB, BC and AC respectively of triangle ABC. We have to find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. Let us see. See, if I want to apply the theorem related to areas, which is theorem 6.6, then I should first have similarity between these two triangles. Which two triangles? DEF. Let's just join these points and form two triangles. DEF and the bigger one ABC. But in the given conditions, nothing is related to its angles or side proportional are given to us. So our first aim here is to actually make them triangles similar. Then we will calculate its ratio and we are going to write it in front of it. So how to make the triangles similar? Let us start with the solution. First thing, we want a relationship between EF and AB. Right. Now this is the midpoint. Can I say that rather I will write that AD is to BD is equals to AF is to FC is equals to BE is to EC is equals to 1:1 because these are the midpoints. तो AD और BD बराबर है और अगर हम दोनों को डिवाइड किया तो 1 आएगा. Similarly for the rest of the sides, right? So we are marking it as equation 1 and moving further. Now if I for some time forget these two lines and I am only bothered with this EF line and this AB. Do you remember the basic proportionality theorem? We are going to apply its converse. How? It says that in a triangle, if a line drawn divides the two sides of the triangle in equal ratios, then that line is parallel to the third side of the triangle. So if I am considering EF is dividing my, if I say EF is dividing my triangle ABC such that AF upon FC is equal to EC upon, I'll take first BE. BE upon EC, then
line EF is parallel to line side AB using the converse of PPT. फिर से याद करेंगे क्या था converse कि triangle की अगर forget about this side, triangle को एक line parallel ट्राइंगल के अंदर है और वो उसकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, यानी कि AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। अगर वो ऐसा कर रही है तो वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड की, यानी थर्ड साइड यहाँ पर जो है वो है AB हमारी। तो इसी तरह से EF AB के पैरेलल है, तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि EF जो है वो तुम्हारी, अब वापस इसको ज्वाइन कर देती हूँ, हाफ ऑफ AB के भी पैरेलल होगी, यानी कि EF जो है वो पैरेलल होगी BD के भी। अब अगर इसी तरह से हम दूसरी साइड लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं ये शो करना चाहती हूँ कि ये जो मेरा फिगर है BEFD ये एक पैरेललोग्राम, मैंने एक पेयर को तो इसके अंदर कर दिया पैरेलल। अब मेरा एम है DF को पैरेलल करना BC के साथ, तो सेम कंडीशंस अप्लाई करके मैं ये बोल सकती हूँ अगर एक ट्राइंगल है ABC तो इसके अंदर क्या होगा कि by again applying the converse of basic proportionality theorem, DF would be parallel to BC और DF would be parallel to half of BC, यानी कि DF भी हमारा पैरेलल हो जाएगा BE के। This is your third equation. Now, if I consider this BEFD quadrilateral using 2 and 3, I get कि इस BEFD में EF पैरेलल है BD के और देखें तो ये BE भी पैरेलल है DF के। This implies BEFD is a parallelogram because two pairs of opposite sides are parallel. So in a quadrilateral when this happens, it becomes a parallelogram. अब ये करने से मुझे क्या मिला? इसके बाद मैं ये बोल सकती हूँ similarly, जिस तरह से ये एक parallelogram है, उसी तरह से ECFD and EFAD are also parallelograms. Right. Now we are going to relate these parallelograms with this. Now, can I say since it's a parallelogram, therefore BE is equals to the opposite sides are parallel and equals, so equals to DF, and EF is equals to BD. Right. So from here, can I also say that this EF is equals to BD? This implies that EF is also equal to half of AB. Right. Similarly, I can say that in triangle DEF, what is happening? If I take the ratios of the sides of triangle DEF and ABC, let me see. See, now here you have to be careful. Here in the question it is given DEF. But if I actually relate the sides, I am getting that if I divide EF by AB, I will get here that EF is half of BD. So here AB upon AB. So half is the ratio of EF upon AB. So EF is related to AB. Similarly, if I see from the figure, DE is related to AC. DE और AC का ratio निकालते हैं. DE क्या है एक्चुअली? DE ये भी एक पैरेललोग्राम था, तो DE भी है क्या? हाफ ऑफ AC. यहाँ पे AC gets cancelled, रेशियो आ गया तुम्हारा हाफ. थर्ड चीज क्या है? थर्ड साइड देखें तो हम EC is DF is related to BC. So if I say
that this is a parallelogram. So DF is half of BC also. So half of BC I am putting. Again here BC gets cancelled. Again the ratio is half. So if I look at the ratio of the sides of triangle, what it should be? The ratio should be DE upon AC should be equal to EF upon AB should be equal to DF upon BC. So if I look at the ratio of the three sides, इसकी कौन सी तीन sides हैं? DE, EF और DF. DE, DF और EF. इसकी कौन सी है? AB, BC, AC. क्या इन तीनों के ratios, सबके ratios half के बराबर आ रहे हैं? तो can I say the triangles are similar? Therefore I will say triangle DEF is similar to triangle ABC, and automatically triangle DE, rather I will now use appropriate terms. I am having DE upon AC. So if I am saying triangle DEF is similar to triangle dash dash dash. AC आना चाहिए BE के सामने, EF के सामने AB आना चाहिए, तो DE के सामने तुम्हारा आ रहा है AC, इसका मतलब CA आना चाहिए, DE के सामने CA आना चाहिए, EF के सामने AB आना चाहिए और DF के सामने BC आना चाहिए. तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना है. बाय ट्रिपल एस ये तीनों ट्राइंगल जो हैं, हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हो गए. तो ऑब्वियसली इनके एरियाज जो हैं उनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो प्रोपोर्शन में आएगा. सो कैन आई से दैट if the triangles are similar, therefore triangle DEF is similar to triangle CAB. We have just proved. This implies area of triangle DEF is to area of triangle CAB will be equal to the squares of the ratio of the corresponding side using theorem 6.6. You will mention the statement of the theorem. So that is, you can mention here EF upon AB whole square, DF upon BC whole square is equal to DE upon AC whole square. Now, when we say that these are equal, let us consider this ratio. Now, DE can be written as what? DE is to AC मैंने अभी हाफ निकाला यानी हाफ का स्क्वायर. किसी भी एक को मान लो, सबकी वैल्यूज हाफ आ रही है यानी कि 1:4. So ratio of these triangle is 1:4. That is your answer.